In last video, we discussed GST in trading chain. Now, we will discuss what is shares. First, let's quickly understand the meaning of terms which we are going to see in the video. Capital is the amount required to start the company. Next is share. Share is the smallest unit of capital. Next is shareholder. A person who owns the share is called a shareholder. Stock exchange. Next term is stock exchange. The place where buying and selling of shares takes place is called the stock exchange. It is also known as share market or stock market. Next is face value, in short FV. The value printed on share certificate is called the face value of share. It is also called nominal value or printed value or par value. Next is market value or MV. The price at which the shares are sold or purchased in stock market is called the market value of the shares. Next, dividend. The part of annual profit of a company which is distributed per share among shareholder is called the dividend. मीन्स साल भर में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. This capital is divided into small equal parts. Each part is of ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 etc. कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू 1 से 100 या उससे ज़्यादा. These small parts is called share of the company. Now the comparison of face value FV and market value means MV. If MV is greater than FV, then the share is at premium. Suppose FV is 10 rupees and MV equals to 15 rupees. Then 15 minus 10 is 5 rupees. Then we said the share is at premium of ₹5 as MV is greater than FV. If MV is equals to FV, then the share is at par. If MV is less than FV, then we said the share is at discount. Suppose FV equals to 10 rupees and MV equals to 7 rupees and 10 minus 7 is 3. Therefore, we said the share is at discount as MV is less than FV. Now we will see some formulas. These 4 formulas are very important because all problems of this topic based on these 4 formula. इसलिए इस चारों फॉर्मूले को आप अच्छे से समझिए. फर्स्ट फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड. सम इन्वेस्टेड मीन्स अगर आप शेयर खरीदने के लिए शेयर मार्केट गए तो आपको जो भी अमाउंट लगेंगी वो है आपकी सम इन्वेस्टेड. आपने जितने भी शेयर्स खरीदे उनको मार्केट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगी सम इन्वेस्टेड. सो सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड अपॉन MV. MV को इधर लेके जाइए. सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट इज डिविडेंड इक्वल्स टू % डिविडेंड्स ऑफ MV. कंपनी को साल भर में जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी सभी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो अगर आपको 10% डिविडेंड मिला तो कौन से वैल्यू के 10% रहेगा वो डिविडेंड फेस वैल्यू के. सो डिविडेंड इक्वल्स टू % डिविडेंड्स ऑफ फेस वैल्यू. Next is rate of return. To know the rate of return on investment, we use this formula. We can calculate rate of return by this formula.
rate of return equals to dividend income means this dividend upon sum invested means this sum invested. Amount required to purchase the shares in share market into 100. So we can use these 4 formulas. These are very important formulas to solve the problems of this topic. Now we will solve some problems. First problem is, what amount is to be invested to buy 20 shares of face value rupees 50 at par? If these shares had been at a discount of rupees 2, then how much less would have been the investment? अब यहाँ क्या दिया हुआ है? एफ वी फेस वैल्यू दी हुई है, एफ वी इक्वल्स टू ₹50 और निकालना क्या है? व्हाट अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड मीन्स सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है. टू बाय 20 शेयर फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर क्या है? नंबर ऑफ शेयर 20, face value 50. If these shares had been at discount, then how much less would have been the investment? अब FV 50 है but share is at par, so FV equals to MV. Therefore MV equals to ₹50. मार्केट वैल्यू भी 50 रुपीज ही है, फेस वैल्यू भी 50 रुपीज ही है. Now we use this formula sum invested. Sum invested equals to number of shares. Number of share into MV. Number of share क्या है? 20 into MV 50 equals to 5 2s are 10 rupees 10,000. Sum invested क्या है? rupees 10,000. Now share is at discount. Means MV, therefore MV equals to 50 minus 2 equals to ₹48. Therefore sum invested equals to पहले MV मार्केट वैल्यू 50 रुपीज थी, अभी शेयर डिस्काउंट पे इसलिए मार्केट वैल्यू 48 रुपीज है. सो सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर 20 इंटू MV है अभी 48 equals to 20 into 48 is 960 rupees 960. Therefore less investment is rupees 960. Next problem is, what is the investment to purchase 80 shares of FV ₹10 at a premium of ₹5? How many shares can be purchased for ₹300? यहाँ FV क्या है? FV equals to ₹10 and share is at premium of ₹5. प्रीमियम है ₹5. Therefore MV क्या रहेंगी? MV equals to FV plus premium means 10 plus 5 equals to ₹15. MV क्या है? मार्केट वैल्यू है 15 रुपीज. हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट टू परचेस 80 शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? इक्वल्स टू 80 शेयर्स. सो सम इन्वेस्टेड निकालनी है हमें. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स 80 इंटू MV क्या है? 15 इक्वल्स टू 15 8s are 120 and 0. So the investment, therefore investment to purchase 80 shares is ₹1,200. अभी हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी शेयर्स कैन बी परचेज फॉर ₹300. 300 में कितने शेयर्स परचेस कर सकते? तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ शेयर्स
इक्वल्स टू नंबर सम इन्वेस्टेड क्या है अभी 300 अपॉन MV क्या है 15 इक्वल्स टू 20 शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स क्या है अभी 20. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रसाद परचेज अ शेयर ऑफ FV ₹100 when its MV was ₹150. Company declared a dividend of 12% on the share. What was the rate of return on the investment made by Prasad? FV क्या है यहाँ FV equals to ₹100 and MV equals to ₹150. डिविडेंड क्या है 12% मीन्स FV के 12%. FV क्या है 100 के 12% मीन्स 12 ₹12. नाउ रेट ऑफ रिटर्न क्या निकालना है हमें व्हाट was the rate of return on the investment made by Prasad. So we will use this formula. Rate of return equals to क्या है फॉर्मूला डिविडेंड इनकम 12 रुपीज अपॉन सम इन्वेस्टेड क्या है सम इन्वेस्टेड MV क्या है 150 यहाँ 1 शेयर का है इंटू 100 इक्वल्स टू 0 कट 5 2 जार 5 3 जार 3 1 जार 3 4 जार इक्वल्स टू 8 4 2 जार 8%. So rate of return equals to 8%. Next problem is Mr. Amol purchased 50 shares of FV face value ₹100 when the market value of share was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. Here FV क्या है ₹100 and market value MV equals to ₹80. Dividend 20% of FV. FV is 20% of FV equals to 20 rupees. Find the rate of return means rate of return equals to dividend income क्या है 20 upon sum invested क्या है 80 into 100 equals to 0 cancel 2 5 जार and 2 4 जार 4 1 जार 4 5 जार equals to 5 5 जार 25. Therefore the rate of return for Mr. Amol is 25%. Next problem is Srimati Deshpande purchase share of FV ₹5 at a premium of ₹20. How many shares will she get for ₹20,000? Here FV equals to ₹5 and premium equals to ₹20. Therefore MV equals to market value क्या रहेंगी FV plus premium means 5 plus 20 equals to ₹25. Now sum invested. Use this formula. क्या निकालना है हमें sum invested equals to number of share into MV. sum invested क्या है 20,000 equals to number of share. How many shares will be get for rupees? So number of shares हमें निकालने हैं into MVA 25. So number of shares equals to 20,000 upon 25 equals to 25 8 जार 200 and 20.
equals to 800. So, therefore, Srimati Deshpande got 800 share for rupees 20,000. In next video, we will see the new term brokerage.